Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Jatin Vashisht and today I'm going to show you how we can disassemble Lenovo Yoga 510 and we are going to change the RAM, and I have this crucial memory stick with me. This is 8 GB and this cost me somewhere around 2800 to 3000 Indian rupees. फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे Lenovo A510 को कैसे इसका बैक पैनल हम ओपन कर सकते हैं और कैसे हम इसकी रैम चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। T4 स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। इसके थ्रू आपको ये सभी स्क्रू जो इस पैनल में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बॉडी में ये सारे स्क्रूज आपको वन बाय वन ओपन करने हैं। इसका बैक पैनल ओपन करना एक्चुअली बहुत ही आसान है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स जहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर छोटा सा यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कवर होता है, यू कैन ओपन दैट कवर एंड यू कैन जस्ट सिंपली रिप्लेस योर रैम विदाउट एक्चुअली ओपनिंग द एंटायर पैनल। So right now I am unscrewing all the screws from the panel and then we will see how we can open this panel and then change the RAM. Now I will also review the RAM and this laptop at the end of this video so that you can, if you are planning to purchase a new laptop, you can decide based on this review whether you want to go for this device or you want to go for any other device. So I have 3 or 4 more screws remaining, so let's just get these out. Now I have 1 screw remaining. Alright, so we are almost there. This is the last one. I'm just trying to get it out. Alright, and I'm going to unplug this mouse USB. So now that I have opened all the panels, so let's see how we can actually take this out. So what you have to do is very slowly you can just start pushing between the line, this particular line, and this will help you to take the panel out. So let me show you how you can do that. So you can see that the panel is coming out slowly. So you can see here that the panel is just popping out of the main frame, right? This thing that you can see. And in the same way, I'm going to remove all the 4 sides. And removing the panel is quite easy in this case. You don't need to make a lot of efforts. So if you can see that how easily it is coming out, right? तो आपको सिंपली आप कोई एक प्लास्टिक का कार्ड भी ले सकते हैं और so that now I have unlocked most of the panels. I can just simply pull this out and you can see that the back panel has now been detached from the main device. And my dear friends, the only drawback that I found with this device is that you only have a single slot for the RAM stick. आप इस लैपटॉप में सिर्फ एक ही रैम इंसर्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल आपको रैम स्लॉट दिया गया है जो कि आपका इस पर्टिकुलर स्टील केसिंग के अंदर है. सो यू कैन जेंटली लिफ्ट दिस स्टील केसिंग एंड नाउ दिस इज़ योर मेमोरी स्टिक. आज हम इसको रिप्लेस करेंगे 8 GB मेमोरी स्टिक से और फिर हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, और हम मेमोरी स्टिक चेंज करने के बाद फिर से इसको एक बार दोबारा से बैक पैनल को फिट करके इसको हम क्लोज़ कर देंगे. सो गाइस, वी हैव चेंज द रैम, और इस लैपटॉप में से जो रैम हमें मिली है वो है सैमसंग
एंड दिस इज़ अ 4 GB रैम DDR4 रैम। तो ये मेमोरी स्टिक हमने निकाल ली है और जो क्रूशल मेमोरी स्टिक थी वो हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम में आप इसमें एक ही रैम स्टिक इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस मशीन। So after you have successfully installed the new stick, then it's time for you to just put all the things back to the same place. तो अब हम इसको दोबारा से पैक करेंगे। आपको पैक करने के लिए सबसे पहले ये जो यहाँ पर आपके पास ये नेट वाला पोर्शन है, सबसे पहले आपको इसको फिट करना होता है। आप इसको यहाँ से बहुत इजीली धीरे से प्रेस करेंगे तो आपको क्लिक की साउंड आएगी। इट मीन्स दैट द locks are in place. So these all are locks in place. Now this lock should be in place, and in the same way all the locks should be in place. So जैसे ही आपको एक यहाँ पर क्लिक की नॉइज़ आएगी, ये क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी, तो इसका मतलब ये सारे लॉक्स अपनी जगह प्रॉपर्ली सेट हो चुके हैं। So now you can see here all the locks are in place. So now we will again put all the screws back into this machine. Now what you have to remember here is there are 2 screws which are bigger in size, as you can see here, and the rest of the screws are smaller in size as compared to these 2 screws. So these 2 screws are placed at the bottom corners of this device or the back panel. Don't insert these big screws somewhere in the middle or you might damage the motherboard as well. ये जो बड़े वाले स्क्रूज़ हैं ये आपको हमेशा नीचे की साइड जहाँ पर ये आपका नेट है वहाँ पर दोनों कॉर्नर्स में आपके बिग स्क्रूज़ लगेंगे। बाकी सारे स्क्रूज़ अपनी अपनी जगह आप किसी भी होल में लगा सकते हैं। सो लेट्स अगेन जस्ट पुट ऑल द स्क्रूज़ बैक इन देयर प्लेस। So now all the screws are back in place and the laptop is ready. So at the end of this video I am going to review the product, that is Lenovo Yoga. The product is really good. This is a touchscreen laptop with Core i3 processor and 4 GB of inbuilt RAM. See, if you are doing your everyday task, a normal work, then a 4 GB RAM is sufficient. But if you are using applications, multiple applications together and you want a flawless processing, in that case you need to upgrade RAM to 8 GB RAM. Now when it comes to the quality of device, it is really amazing. You can also use the laptop as a power bank to charge your mobile because there is always on USB available here, and you can fold this laptop into 360 degrees. It means you can also use it as a tablet, and the keyboard is really effective. It helps you to get a good typing speed. Now let's talk about the Crucial Memory RAM. Crucial Memory RAM is actually a very good product. I have gone through various different websites, shopping websites or shopping portals, and I have seen reviews, and there are multiple other brands which are available in the market in, you can say, in the same cost or maybe 100 or 200 rupees less than the Crucial Memory. And the other brands actually don't provide you the quality that you get from the Crucial Memory, because I have personally observed that after installing this RAM stick the performance has increased drastically. So I would recommend Crucial Memory stick for all the laptops that you are using and planning to upgrade your RAM. And guys, if you like this video and if you want some more videos to be created on some more topics, please don't forget to write down your suggestions in the comment section, and please don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you very much. This is your host Jatin Vashish signing off.